Good morning, children. Welcome to class 7, subject English, lesson number 1, 3 questions. I have explained the lesson and I hope you have revised it. And today we will start with its exercises. So let's see from the book. Okay, here exercise 1 is comprehension check. Here complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. Here are some incomplete sentences given and you have to complete them with the help of these points which are given in the box. Okay. See the first question. Many wise men answered the king's questions. Many wise men answered the king's question. Here we have to find out the answer from this box, but their answer were so worried that the king was not satisfied. बहुत सारे वाइज पर्सन्स ने आंसर दिए किंग्स के क्वेश्चन के, बट उनके जो आंसर्स थे उनसे किंग को सेटिस्फेक्शन नहीं था, उनसे वो सहमत नहीं थे, क्योंकि सभी वाइज मैन के आंसर्स कैसे थे, अलग अलग थे, डिफरेंट थे, वरीड थे. Now second number, so the first answer is, but their answers were so varied that the king was not satisfied. Now second, someone suggested that there should be a council of wise men. Some person suggested the king that there should be a council of wise men, कि wise persons की council रखनी चाहिए. और उसके आंसर्स में क्या आएगा, to help the king act at the right time, क्योंकि उनकी सलाह से जो कौन सा कार्य राइट टाइम पे करना है वो सजेस्ट कर सके. सो द सेकेंड आंसर इज टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. ओके, नाउ थर्ड वन, someone else suggested that the king should have a timetable, कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए. We have to complete the sentence from this box that and follow it strictly. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. Now the king requested the hermit. किंग फिर किसके पास जाता है, हर्मिट के पास जाता है और उनसे उस 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछते हैं. द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. ओके, नाउ फिफ्थ, the king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. जो किंग था उसने bearded man के जो wound था, जो घाव था, वो ड्रेस तो किया, उसकी ड्रेसिंग की, पर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा था. Here answer the following questions. Before we go ahead with answer the questions, let's see exercise 2 here. Match items in list A with their meanings in list B. Here just as you have to match the words with their meanings. Now here the first word which is given, there's like fainted and its meaning is lost consciousness, means बेहोशा हो जाना. Now here A, wounded. Wounded means we have to find out from B group. Wounded means severely injured. Severely injured, सख्त घाव लगा हो उसे wounded कहते हैं. Now awoke. Awoke means यह got up from sleep, means जागना. Forgive. Forgive means pardon, माफ़ी देना. Faithful. Faithful means loyal, विश्वासु. Pity. Pity means दया. Feel sorry for. Pity means feel sorry for. Now beds. Beds means your small patches of ground for plants. Plants को उगाने के लिए जो small patches ज़मीन में बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, उसे बेड्स कहते हैं. Now return. Return means give back, वापस देना. Okay. Now exercise 3.
Each of the following sentences has two blanks. Fill in the blank with appropriate forms of word given in the bracket. Here you can see each sentence has two blanks. जो एक सेंटेंस दिया है उसमें दो ब्लैंक्स है और एक ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है और उसका यूज़ करके हमें ये टू ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड फिलअप करना है एज अ नाउन और एज अ नाउन और एज अ वर्ब। ये जो वर्ड दिया गया है उससे हमें एज अ नाउन यूज़ करना है और एज अ वर्ब यूज़ करना है। The first is done for you here. He has blank to help me. Do you think he will remember his blank? Here promise is given and here the answer is also given. He has promised to help me. Here has is given, so promised is written as in the past participle form. He has promised to help me. It is used as a verb in the first blank. Do you think he will remember his promise? And in the second blank it is used as a noun. Do you think he will remember his promise? Right? Okay. Now as we have to solve these sentences. Now the blank said that only fresh evidence would make him change his blank. Here the word given is judge. Now in the first blank the blank said, the judge said, here it is used as noun. The judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. Okay, now judge is given and we have to use in the different forms of the words according to the sentence. Okay. Now second blank. I didn't notice any serious blank of opinion among the debaters, although they blank from one another over small points. Here differ is given. Right? Now I didn't notice any serious difference of opinion. Here differ is written in the form of difference. Serious difference of opinion. You have to write the form of word according to the meaning of the sentence. Right? Serious difference among the debaters, although they differed from one another over very small points. Okay. Next, it's a fairly simple question to blank, but will you accept my blank as final? Your answer is given. It's a fairly simple question to answer, but will you accept my answer as a final? Both the answers are same here according to the meaning of a sentence. Now it isn't blank that blank should always be the mother of invention. Here necessary is given. Now it isn't necessary that necessity should always be the mother of invention. Fifth number, hermits are blank men. Hermits, here wise is given. Hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. Wise is written in the form of wisdom. The committee has blanked to make Jagdish captain of the team. The blank is likely to please everyone. Here decide is given. The committee has decided to make Jagdish captain of the team and the decision is likely to please everyone. Now asking for blank is as noble as willingness to blank. Here forgive is given. Now asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. Okay. Now we have to use this word in the two forms according to the sentence. Now in exercise 4, here speaking and writing. Here two questions are given in exercise 4. Imagine you are the king and narrate the incident of your meeting the hermit being like this. Now from this story you have to imagine that you are the king. आपको ये सोचना है कि आप किंग हो और आपको आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो आपको नरेट करना है। जब भी आप हर्मिट से मिलते हो तो वो जो भी कुछ हुआ उसे आपको अपने शब्दों में नरेट करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन दी गई है, द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस। हियर सपोज यू आर द किंग एंड यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, the wise man answered my questions, but I was not satisfied with their answers. One day I decided to go to meet the hermit, and you have to complete the story.
that you have to imagine that you are a king. You have to write to yourself. Now second, imagine you are the hermit and write briefly the incident of your meeting the king. Begin like this. Same as here in the first question, you have to imagine like you are a king, and in the second one you have to imagine like you are hermit, and start like this, that one day I was digging in my garden, a man in ordinary clothes came to see me and I knew it was the king. And you have to complete this story from the lesson as you are the hermit. जैसे कि आप एक hermit हो और आपको ये story complete करनी है कि आपके साथ क्या incident हुआ. Okay. Now let's see the question answers. First question is, why was the king advised to go to magician? King को magician के पास जाने के लिए क्यों advise किया गया? Some people said that there were some things which could be urgent and these things could not wait for the decision of the council. कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि जब भी कोई अर्जेंट वर्क होता है तो उस समय काउंसिल के डिसीजन के लिए वेट नहीं किया जा सकता. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग इट वाज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. सो द राइट टाइम कौन सा है ये डिसाइड करने के लिए हमें फ्यूचर में जाना ज़रूरी है. फ्यूचर हमारा क्या होगा वो देखना ज़रूरी. तो ओनली मैजिशियंस कुड लुक इनटू द फ्यूचर. तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मैजिशियंस होते हैं वो ही फ्यूचर देख सकते हैं. द किंग therefore would have to go to the magician. इसलिए किंग को मैजिशियन के पास जाना पड़ा. In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में किंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट था? In answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others also chose the doctors. Yet the others said that his soldiers were the most necessary. Who was the most important person for the king? All the people advised differently. Some said that it is necessary the king were his counselors, some others is priests, some others is doctors, and some said about soldiers, right? Okay, see the next question. What suggestions were made in answer to the third question? थर्ड क्वेश्चन के सजेशंस में क्या कहते हैं लोग? तो इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, some did science, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. Okay, did the wise man win the reward? If not, and why not? जो वाइज मैन ने जो सजेशंस दिए थे तो उनमें से किसी को रिवॉर्ड मिला, जो नहीं मिला तो क्यों नहीं? No, the wise man did not win any reward because the king got different answers for all the three questions. क्योंकि किंग को सभी के अलग अलग आंसर्स मिले एंड द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ही गॉट और किंग को जो भी आंसर्स मिले उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया. सो ही डिड नॉट गिव एनी रिवॉर्ड टू anyone. Now, how did the king and the hermit have the wounded man? King और hermit ने उस wounded man की help कैसे की? The king and the hermit gave the wounded man shelter and protected him from the army. And the king washed and covered the wound with his handkerchief. उसने उस wounded man को shelter दिया और वो जो उसे आर्मी से प्रोटेक्ट किया और उसके जो घाव थे वो भी ठीक किए, उसकी हैंकरचीफ से उसे कवर कर दिया. द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कम्प्लीटली. और जब तक उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तब तक उन्होंने किंग ने उसका वुंड का रीड्रेस किया. देन गेव हिम अ फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड कैरिड हिम इनटू द हट वेयर ही लेड फॉर द रेस्ट. और फिर उसको फ्रेश वाटर दे के उसको फिर हट में ले जाके उसे रेस्ट कराया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द बियर्डेड मैन एंड वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? बियर्डेड मैन कौन था और वो किंग को माफ़ी देने के लिए क्यों कह रहा था? द बियर्डेड मैन वॉज एनिमी ऑफ द किंग हु स्वेयर टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग हिज प्रॉपर्टी. बियर्डेड मैन जो था वो किंग का एनिमी था और वो बदला लेने के लिए उसने कसम खाई थी. ही स्वॉर टू रिवेंज हिम एंड फॉर सीजिंग हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ. वो जो बियर्डेड मैन था वो बदला लेने के लिए आया था किंग से, क्योंकि वो ऐसा कहता है कि उसने उसकी प्रॉपर्टी, किंग ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और उसके ब्रदर को भी मार डाला था. ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ. और वो किंग से क्यों माफ़ी मांगता था? क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई. ही केम देयर टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग बट इंस्टेड द किंग हेल्प हिम टू गेट बेटर. वो तो किंग से बदला लेने के लिए वहाँ पे आया था, किंग को मारने के लिए आया था, लेकिन किंग ने तो उसकी जान बचा ली. द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस? किंग ने उसे माफ़ कर दिया और माफ़ी देने के लिए
what did he do to show his forgiveness? उसकी फॉरगिवनेस को बताने के लिए उसने क्या किया? द किंग वॉज हैप्पी दैट ही मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. And the king not only gave the bearded man but also said that he would send his servants and his own doctor to look after him, and he also promised that he would return the man his property. उसने उसे जो है कि उसके सर्वेंट्स भी भेजे और अपना डॉक्टर भी उसकी केयर करने के लिए भेजा, और उसको प्रॉमिस किया कि उसकी जब भी जो सभी प्रॉपर्टी है वो भी उसे वापस कर देंगे. The what were the hermit's answers to their 3 questions? जो आंसर्स थे किंग के, तो हर्मिट ने क्या आंसर दिया उन तीनों क्वेश्चंस का? राइट ईच आंसर सेपरेटली. इन रिप्लाई टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज द वन इम्पोर्टेंट टाइम नाउ. व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टाइम? द इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ. इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव द पावर टू एक्ट. आपको जो भी काम करना है वो अभी का जो समय है वही है important. In answer to the second question, the most important person is with whom we are at present. And the response to king's last question, the hermit said that the most important thing is to do that person good. और जो person के लिए हम अच्छा करते हैं वो हमारा सबसे important कार्य है. Okay, now I hope you have understood all the exercises. Now you have to write all the exercises in your notebook with neat and clean handwriting. Okay, we will continue with the poem of this lesson of this chapter in the next session. Thank you.